अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम MS वर्ल्ड MCQs की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर, जिसमें जो कि बहुत ही सिलेक्टेड MCQs में हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में से बहुत ही अहम और MS वर्ल्ड के हवाले से बहुत ही अहम MCQs हैं, जो कि PPSC CSS और NTS इसके हवाले से बहुत ही अहम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस के किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस के यूज़ होता है कि इंसल्ट हाइपरलिंक को जब हमें इंसल्ट करना होता है तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस की प्रेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फॉर्मेट कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम? इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट कॉलम। फॉर्मेट कॉलम को हम न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम जब हम क्रिएट करते हैं तो फॉर्मेट कॉलम भी हम सेलेक्ट करते हैं। विच मेन्यू डू यू चूज टू क्रिएट फुटर इन MS ऑफिस 2003? करेक्ट आंसर है डी, व्यू हेडर एंड फुटर। What happens when you insult an artist shape by simple clicking in the documents? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। इट अपीयर्स नियर द इंसर्शन पॉइंट, it inserted into the default size is selected. What does exist indicator on status bar of MS indicates? इसका करेक्ट आंसर है सी, it indicates whether extended selection mode is turned on or off. What happens when you click on insert picture and clip alt? The correct answer is C. It opens click alt task panel. What happens if you press Ctrl plus Shift plus F8? शॉर्टकट की हम जब यूज़ करते हैं Ctrl प्लस Shift प्लस F8 तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट एक्टिवेट दी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एक्टिवेट्स हो जाती है। What is the use of all caps feature in MS Word? The correct answer is A. It changes all selected text into capital letter. ऑल कैप्स का मीन होता है कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे हर चीज़ उसमें जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन्हें कैपिटलाइज कर दे। The feature of word that automatically adjust the amount of space between strain combination of character so that an entire word looks more evenly spaced. What is that feature called? The correct answer is C, carrying. To select multiple cells, rows and columns in a table that are not adjacent to another, select the first cell and then hold down the dash key while selecting the next cell, row and column. The correct answer is B, shift. Getter position can be set in the following position. The correct answer is B, left and top. The hash indent all the lines of paragraph except first line. The correct answer is C, left indent marker. It documents it is patriot orientation points. The correct answer is C, less characters per line that the same documents in line space. A dash is a formatting mark at the end of line that moves the insertion point to the beginning of the next physical line. The correct answer is C, line break character. Which option enables automatic update in destination documents? The correct answer is D, relationship. Which of the following position is not
available for fonts on MS Word? The correct answer is D. Cantled. When you point to the dash corner of a table move handle appears. The correct answer is D. Upper left. The ability to combine name and address with the standard documents is called. The correct answer is mail merge, which enable us to send the same letter to different person. The correct answer is C. Mail merge. A word processor would most likely be used to do. The correct answer is D. Type of biography. What is Git margin? The correct answer is C. Margin that is added to the binding binding side of page when printing. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।